Good morning, everyone. My name is Umang Bhatia. I am here for an internship. Today, I am playing the role of a school counselor and practicing a case study regarding based on children. Hi, I am Nandini. I am playing the role of client. These anxiety के issues होते हैं. And I Actually, let me tell you about myself. My name is Umang, and like sometimes I feel that in my neighborhood, like their thinking pattern is different. Like sometimes I feel कि वो बार बार बहुत ज्यादा क्या कहते हैं पूरा मतलब फेंकते हैं लाइक एज इन गार्बेजेस जो भी होते हैं लाइक they always try to throw outside. Like sometimes it happens in front of our house also. But I know, I understand that maybe they have some psychological issue, mentally not well, that's why they keep on doing the same things again and again. I also have told them like आप ऐसे मत किया करिए, this not good. I tried to make them aware, but they are not able to understand. So I want you to please tell me or give me guidance, like what should I do? Okay, among your age, I'm 26. marital status, Unmarried. you are working somewhere. Yeah, I'm a school counselor. As a school counselor, I try to understand it's okay, fine. But repeatedly, they are doing the same action. So for that, I think sometimes I think I should avoid it. I should not say anything. But they understand, then again, they do the same thing. What should be done? तो आप मेरे को बताना चाहोगे कि आपको एग्जैक्टली दिक्कत क्या हो रही है? मेन पर्पस ये है कि हमें उनको चेंज करना चाहिए कि हम सेल्फ चेंज ही हो जाएंगे. क्या करना चाहिए कि मैं ऐसे एज आई प्रैक्टिस मेडिटेशन तो मैं अपने आप को खुद ही हील करती हूँ कि ठीक है, if they are not able to understand, I should understand. Am I right? Like, तो गुस्सा आ रहा है बार बार. गुस्सा नहीं, बट मैं बार बार ये सोचती हूँ कि ऐसे ये लोग क्यों करते हैं, मतलब क्यों इनको अवेयरनेस नहीं है. तो ये कंटिन्यूअस में हो रहा है या किसी episodic way, like they do in a month, sometimes in a month, 2 weeks, yeah, 3 weeks भी देखते हैं, मतलब ऐसे करते हैं. Even their mentality, their thinking is also not good. Negative सोचना, मतलब सबके बारे में don't do. Only we have one neighbor only in a neighborhood. So what do we do? तो आपका बॉन्ड कैसा है लीवर के साथ? Bond like normal as such कुछ नहीं है. Only with them we are not comfortable. So we usually do not speak sometimes, and I have also explained myself like this कोई फायदा नहीं मुझे समझाने. Am I right in this thinking? Partially right, I guess. क्योंकि किसी को हम चेंज तो कर नहीं सकते हैं, but I think by giving them space and understanding, I think वो अपने आप naturally recover कर ले इस चीज को. क्या ये ठीक है? So, can you please tell me your name? I'm Nandini Sharma. Okay. So, are you feeling safe? Yeah. Okay. So please tell me, like, what are the problems which you are facing? Right now, I'm facing anxiety and I have a difficulty in breathing, palpitations होने लगता है, sweating आती है. Your name is Nandini. And please tell me your age. 20. Okay. Your date of birth? 3rd September. Okay. 2000. Okay. Your mother's name? Archana Sharma. Father's name? Arpusha.
please tell me about your mother's occupation. She is a homemaker. Your father's occupation? Ministry of Defense. Okay. So, as you said, you are feeling anxiety. So, what do you think? Like in school, you're in which class? I'm in 12th. Okay. So, what kind of anxiety? Since when you are facing this? Like, Actually, मेरे को humanities लेनी थी, okay, but my father forced me to take the science stream. you are interested in taking humanities, and you were forced to take science. So, right now at present, you are having science as a stream. So, what the subjects are difficult? Yeah, difficult. Then humanities for sure. Okay, so have you discussed this with your family? Yeah, I discussed with mother, but कुछ हुआ नहीं है. Father ने force किया था कि like he wanted me to become a doctor, So, but I don't have interest. so that's why you make difficulty. So, have you talked to any person, any guardian who you feel like they guide you? और मैं अपने फ्रेंड से ही शेयर कर पाती हूँ, बेस्ट फ्रेंड है मेरे. तो आप उनसे शेयर करें. So, आपने पेरेंट्स से मतलब डू यू वांट कि मैं आपके पेरेंट्स से बात करूँ फर्दर? So, you are not comfortable with that. पापा नहीं माने. Okay. So, I will just give you a number. I can contact your father. Maybe by the help of brainwash with the correct instructions, maybe he will understand. क्योंकि उन्हें बहुत लोगों ने समझाया था. So, now what you want? You want to continue with science? भगवान की आने. So, do you want that you want to continue with science? So like, and you are anxious about the topics which are there in that syllabus, right? Especially physics. Physics. So, have you taken tuitions, or do you go to coaching center? No, my father. He's you are comfortable studying with him, right? Okay. So, if you are now satisfied and you have no problem in studying science further, then I think you must concentrate on the subjects which you like in science, like physics, chemistry, biology. What are because till 10th, and as you have studied now, right? Now you are in 12th and you have taken science and a stream. You know, in colleges you have to study further any ones, yes, correct? So just 6 to 6 go 6 with that, and 6 with to the help 6 of YouTube videos, and you don't have to be confident. You have to build up that confidence. You need not to bring these emotions of anxiety, those things into your mind, because it is impacting your overall academic performance, your mental health. So it is important to understand that you are now choosing this stream, and without being anxious, you have to study this, and you need to satisfy yourself. And so, any further issues except anxiety? So you can heal this emotion slowly and gradually. This is not a big issue. So I think for most of the students it is difficult, but now if you are satisfied with your subject, then you further can. But many ये सुना है कि anxiety leads to OCD and then OCD leads to depression. ऐसा कुछ तो नहीं होगा.
सीवियर सी moderate अगर है तो you have to take the knowledge for yourself. अगर आपको लगता है कि आपको ऐसा फील होता है एंग्जाइटी इश्यूज है तो जस्ट थिंक कि उसको ओवरकम करने के लिए कुछ स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो मे बी वो सीधे तक ना पहुंचे, बिकॉज ये सारे ट्रिगर्ड इमोशंस हम खुद ही क्रिएट करते हैं, पेरेंट्स को वी क्रिएट आवर इमोशन। सो अगर आपको लगता है कि एंग्जाइटी है तो just pause and check up on yourself and visit to if required visit At the first session आप बहुत कॉन्फिडेंट थी अपने सेशंस को लेके, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन योर एडवाइसेस एज वेल, और आपने जो भी एडवाइस करा अपने पेशेंट को दैट इज गुड, ठीक है, बट इट इज बहुत अर्लियर था। एंड द मेजर थिंग, योर पेशेंट वाज कंफर्टेबल इन हिंदी लैंग्वेज, you didn't focus on it and you are speaking English। समझ रहे हो आप? हमें ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा पेशेंट कहाँ कंफर्टेबल हो रहा है, इंग्लिश में और हिंदी। मुझे अचानक से याद आया, मैंने लिखा है लैंग्वेज के लिए आपका, ठीक है, ठीक है, बहुत ध्यान रखो। You didn't notice the MSc as well your client, you didn't write single word about the MSc। आपके पेशेंट का पोस्चर कैसा था आपने अभी तक नहीं लिखा हुआ इसमें। वॉइस कैसी थी, वी हैव टू ऑब्जर्व द मेंटल स्टेटस ऑफ योर पेशेंट्स एज वेल। हमें हमारे पेशेंट का एमएससी साथ साथ लेते हुए चलना है, ठीक है, हमें उस पर भी ध्यान रखना है कि हमारा पेशेंट बैठा कैसा था, उसका वॉइस बहुत लो था, शी वॉज अंडर कॉन्फिडेंट, उसका पोस्चर बहुत स्ट्रेट नहीं था, लीन था, थोड़ी सी देखो उसके शोल्डर झुके हुए हैं, ठीक है, बहुत एक्टिव नहीं है ये इस समय। आपका जो वो पेशेंट था वो एक्टिव नहीं था, शी वाज हेजिटेटेड, हेजिटेशन हो रही थी बोलते समय, ठीक है। इनके जो आंसर्स थे वो लिमिटेड थे, यानी जब हम स्पीच के बारे में बात करेंगे, जो स्पीच था इनका वो कैसा था, रिस्ट्रिक्टेड था, ठीक है, पुअर वर्ड्स, लिमिटेड वर्ड्स में आंसर देना, जितना उन्होंने पूछा उतना उन्होंने आंसर दिया। ऑल्दो हमारे काउंसलर ने उन्हें WH फैमिली वाला कॉन्सेप्ट दिया नहीं तो ज्यादा एक्सप्लोर कर नहीं पाई, बट जितना भी उन्होंने बोला वो बहुत लिमिटेड वर्ड था। तो ये एमएससी हमें चेकआउट करती हुई जानी है साथ, ठीक है, डन, चलो बहुत अच्छा, अच्छा करा, यू आर कॉन्फिडेंट, ये चीज मैंने देखी, तुमने बहुत अच्छे से स्टार्ट किया, आपका जेस्चर्स बहुत अच्छा था, आपकी क्वेश्चनिंग भी अच्छी थी, लिमिटेड थी, थोड़े से सीक्वेंस अप एंड डाउन हो गए, क्योंकि पहला सेशन था तो कुछ भूल भी गए, फर्स्ट टाइम कोई बात नहीं, पहला है तभी गड़बड़ है, और गड़बड़ है तो सही होना है।